What's up guys? Welcome back to the channel again. Move with Mohit. आज हम बात करने वाले न्यूट्रिशन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेट ट्रेनिंग से भी इंपॉर्टेंट। बॉडी वेट ट्रेनिंग वगैरह आप चीटिंग करके जैसे तैसे करके मैनेज कर लेते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन कभी मैनेज नहीं होता है। अगर आपको अच्छी बॉडी बनानी है, अच्छे रिजल्ट चाहिए आपको, तो आप न्यूट्रिशन के साथ चीट नहीं कर सकते। अगर आप चीट कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट द रिजल्ट्स एंड ऑल। सो आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन एंड डाइट के बारे में। ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक वीडियो नहीं होगा, इसके साथ बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होंगे। इट्स काइंड ऑफ अ सीरीज, सो वॉच ऑल द पार्ट्स सो यू विल गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिशन। तो आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन के अंदर हम क्या क्या कवर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन के अंदर हमारी दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो फर्स्टली वी विल कवर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसके अंदर क्या क्या होता है और हम उसमें से कैसे चीज़ों को आगे अपनी डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हैं। सो जैसे मैंने बोला मैक्रो और माइक्रो दो होते हैं, तो आई जस्ट मेंशन ओवर हियर मैक्रोज एंड माइक्रोज। सो फर्स्ट मैक्रोज में हम क्या इन्वॉल्व करते हैं। फर्स्ट इज आवर कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे हम शॉर्ट में कार्ब्स बोलते हैं। कार्ब्स इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल मैक्रोज व्हाट वी नीड इन डे टू डे लाइफ। जैसे कार को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, डीजल चाहिए होता है, ऐसे ही हमारी बॉडी को चलाने के लिए कार्ब्स चाहिए होते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल व्हाट वी नीड टू रन आवर बॉडी। सेकेंडली इट कम्स प्रोटीन। प्रोटीन हमारा दूसरा सबसे एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, जो कि हमें हमारी मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, हमारे हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। whatever the development what we are getting in terms of muscularity, in terms of muscle generation, anything, it goes with the protein part. Third is fat. Fat is also the most essential and the very important nutrients what we need to take in day to day life. अगर हम फैट को नहीं लेते हैं तो you can find lot of issues in terms of your joint, because when we don't take fats and all, our joints don't work properly. So to mobilize our joints and all, to run them properly, we need fat, and moreover to reduce fat we need to take good fat in our diet. So हम इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को डिटेल में बात करेंगे अब, कि इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हमें कितने प्रोपोर्शन में लेना चाहिए अपनी कैलोरीज में, और इनका रोल कैसे है। जो भी हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो हमारा बॉडी में जाके ग्लाइकोजन बनता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट व्हाट आई नीड टू इन्वॉल्व इन carbs, there are different type of carbs what we can take in day to day life. कौन कौन से carbs होते हैं उसके बारे में पहले हम देखेंगे। Carbs are of three types. First is complex. This is the most important what we should consider while taking the carbs in our diet. जो आप complex carbs को एक तरीके से बोल सकते हैं good carbs. Second होता है हमारा simple carbs. सिंपल कार्ब्स में हमारे आ जाते हैं शुगर, डिजर्ट, वट एवर कार्बोहाइड्रेट वॉट वी आर टेकिंग विच गिव्स यू द इंस्टेंट एनर्जी। आप लेते ही एक एनर्जी फील करते हैं, जैसे आप शुगर लेते हैं या एनर्जी ड्रिंक लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, आप एकदम स्पाइक आता है आपको एनर्जी का। दैट इज अ सिंपल। थर्ड इज आवर फाइबर। ये हमारा बॉडी में जाके डाइजेस्ट नहीं होता है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम
it takes a lot of time and stays in our stomach. So this is one of the very essential what we have to take in our day-to-day life. It helps in increasing our metabolism because ये digest नहीं होता तो body has to work to digest it. So it increases our metabolism also. जब हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे जो भी कार्ब्स होते हैं लाइक वाइट ओट्स, रोल्ड ओट्स जिसे बोलते हैं, वो आते हैं, होल ग्रेन, मल्टीग्रेन, bread, pasta, or wheat, whatever you can consider. Then you can involve your brown rice, wild rice, and whatever the beans you take all contains like a lot of fibers and they comes into the complex carbs. सिंपल कार्ब्स का मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया, जो भी आपकी शुगर्स होती हैं, जो भी एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, या आप आइसक्रीम खाते हैं, या जो भी आपको चीज इंस्टेंट एनर्जी देती है, दैट कम्स इनटू द सिंपल कार्ब्स. फाइबर, इन फाइबर यू कैन इन्वॉल्व लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड ऑल, जिसके अंदर आपको बहुत अच्छा फाइबर सोर्स मिलता है. When it comes to the beans, lentils, or oats, they contains a lot of fibers also. So these are all the example for the carbohydrates. And let's talk about how much carbohydrate you have to take in day-to-day life. As per RDA guidelines, a person should consume at least 45 up to 65% of your carbs, whatever the calories you are targeting in a day. So let's say if we take example of 2000 calories, 2000 calories का जो example होता है, ये आपको हर पैकेज फूड पे मिलेगा. जब भी आप पीछे देखेंगे तो it's always according to the 2000 calories. So let's consider that in our mind. We are taking 2000 calories as our base. जो ये 2000 कैलोरी एज अ बेस है, ये मैं आपको अगले वीडियो में भी बताऊंगा व्हाई दे टेक दिस एज अ 2000 कैलोरीज. ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद मी. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग इन फर्दर वीडियोज आल्सो. सो दिस इज द फर्स्ट गाइडलाइन. यू हैव टू टेक 45 up to 65% of your carbohydrate of your 2000 calories. I'm talking about the percentage in all the scenarios. I'm not talking about grams according to the body weight. I mean grams per kg. I'm not talking about that. I'm talking about the percentage and according to the calories what you are targeting in a day. So you can target 2000 or you can target 1500, whatever your goal is. So this should come according to your target. Okay, so let's move to the second one, which is protein. I hope you understand the carbohydrate part. Let's come to the protein. Protein is, I think, one of the most essential in terms of bodybuilding and all. People don't consider more importance of carbohydrate, but they put more importance for the protein. So if a person is building, the goal is building a lot of muscles or to shred weight or to shred fat, protein is the main macronutrients what you have to watch for. You can drop your total carbohydrates. Let's say if you're taking a keto diet, so there is no carbs in the keto diet, but the main source is protein and fat in that diet. अगर हमें मसल बिल्डिंग करना है या फैट लॉस करना है, जो भी हमारा मेन गोल्स होते हैं बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटीन का इसके अंदर. जब हम प्रोटीन हाई लेते हैं, सो वी कैन एक्सपेक्ट टू गेन आर मोर मसल्स. जो हमारा रिकवरी फेज होता है वो हमारा अच्छा होता है. और जब हम प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं तो एक प्रोटीन का एक थर्मिक इफेक्ट होता है, फूड इफेक्ट होता है, जो कि सबसे हाईएस्ट होता है. थर्मिक इफेक्ट के बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे. एज आई सेड कि इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं. इन डिटेल्स वी विल टॉक इन फर्दर वीडियोस अबाउट thermic effect, about total daily energy expenditure, about BMR, everything. It will be different videos on every topic.
So go through every video, you will understand the basics of nutrition and diet. These videos will going to really help you in programming your diet and all. So let's talk about protein. हमारा प्रोटीन का जो इंटेक होना चाहिए वो दिन का कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द RDA guidelines. It should start from 15%, goes up to 35%. As I said, minimum should be 15 and maximum should be 35 according to the guidelines. But according to your goals and all, obviously you can manipulate it. Again, 15% is according to your diet, what you are targeting for. Okay, let's come to the third one, fat. ओके फैट्स में हमारे टाइप होते हैं जैसे सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट एंड ऑल. सो जब हम फैट की बारे में बात करते हैं, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट व्हाट वी नीड टू कंज्यूम इन डे टू डे लाइफ. अगर हम फैट नहीं लेते हैं तो हमारे जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं बिकॉज वी नीड ऑयल टू मूव दोज जॉइंट्स एंड ऑल. And on the later stages, fat doesn't mean that it will make you fat. When you're taking a good fat, it actually helps you to reduce the fat. So when we talk about bad fat, that is cholesterol. So if you want to remove your cholesterol, you need to consume good quality of fat. When I say good fat, it comes in the avocado, olive oil, or you can have nuts and all. So all these things contain the good fat, fatty acids also. So when we talk about the fat intake, how much we need to take in a day, it starts from around, again, 15%. You can consume 30 to 35% in your day-to-day life, again according to your calories intake. So this was all basic information about the nutrition, how much calories you can consume throughout your day in a normal pattern. But when we talk about diets, so there are plenty of diets in the market, and every diet having their different proportion, like how much fat you need to take in that diet, how much carbs and XYZ things. So these are all the things what you need to consider. For the diet, we will make another video in which we will talk about a lot of diets and kind of a ratios you can change in those diets and all. Okay, so that was macro. So let's come to the micronutrients. Okay, so again, for micronutrients, there are hell lot of micronutrients what you can consume in day-to-day life. Generally, according to me, according to my understanding, what a person can consume in day-to-day life, first of all, if you are not able to have your proper food and all, I must suggest you to take at least one multivitamin in a day, which is more than enough to fulfill your all daily requirement for the vitamin and minerals. So at least one tablet if you are not able to consume from your food. So first very important micronutrient is ZMA, that is zinc and magnesium. It will actually help in when you are doing a lot of heavy workouts and all. Our muscle needs contractions and relaxation, so it helps in that way. I'll not take much time, so I'll just need to cover all the things. Second thing is your iron. It is also help in muscle building process and your day-to-day body functions and all. Third is calcium. Calcium is very important when it comes to the minerals. Especially for the ladies, when a girl age, their bone densities goes less and all, and they feel weak about their joints and all. So calcium is the way where they can make it stronger and feel better about themselves. Third was calcium. Fourth is
Vitamin C. Vitamin C you can get in all the citrus fruit like oranges, lemon, and even the green apple और whatever जो भी आपको खट्टा लगता है उस सब में हमारा विटामिन सी होता है. And when you talk about the vegetables, a lot of green vegetables like spinach, broccoli, kale, these all things contains vitamin C and in a very good quantity. So vitamin C is one of the very important thing. Fifth one is vitamin B12, or you can say B6 and 9 also. So whatever the vitamins which comes in B category, they are very helpful. You should not avoid this thing if you are feeling any of the fatigue, any of the pain in your body and all. This vitamin B12 will really help you out to get rid of lot of muscle soreness and all, and most important, the recovery part. And last not the least, we will talk about our last one, which is vitamin D. विटामिन डी हमें जनरली सन रेजेस से मिलता है. जब हम सन में एक्सपोज होते हैं सो वी गेट द विटामिन डी. इसके लिए एक मेडिसिन आता है जो कि 50,000 IU या 60,000 IU का होता है. दैट यू कैन टेक वंस अ मंथ, सो दैट विल बी मोर देन इनफ. It will fulfill your vitamin D requirement. So these were all macronutrients and micronutrients what I need to discuss with you guys. In next video we will going to see how these macronutrients got breakdown in our body और हमारे वो कैसे एनर्जी रिलीज करता है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि हम अगर प्रोटीन लेते हैं या कार्ब्स लेते हैं या फैट लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाके कैसे कन्वर्ट होता है और हमें वो कैसे एनर्जी रिलीज करता है, हमें कितना लेना चाहिए कितना नहीं लेना चाहिए. सो जस्ट स्टे ट्यून एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिले एंड यू कैन बी द फर्स्ट वन हु कैन वॉच द वीडियोज. सो टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे.